of endocrine glands in rat, cat, and rabbit. These are the three animals which we will use to see the different size of the endocrine glands, the location of the endocrine glands in a different three animals, and then we will proceed to demonstrate that one and apply to a large animals, especially when we will visit the slaughterhouse. We will locate the endocrine glands, the demonstration for the endocrine glands on a slaughterhouse will be given to you on a buffalo, cow, sheep, or a goat. But at this moment in the laboratory, we will perform this on the rat, cat, and rabbit. So as you are knowing that endocrine system and nervous system shares the work of controlling and coordinating all the intricate parts and functions of the animal body. So I always say that these endocrine system and the nervous system are the doctors of animals, which is present in all the animals. ये दो system जो है ना, they are performing their role as a doctor. डॉक्टर का काम यही है कि to bring the abnormal or fluctuated the values towards the normal. ये उमूमन जब बीमारी होती है, पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप होती है, वो मोस्टली इसलिए होती है जब इम्यून सिस्टम या फिर एंडोक्राइन सिस्टम या नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं कर पाता टुवर्ड्स द नॉर्मलिटी, वो ब्रिंग बैक नहीं कर पाता. जब ये डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं, देन वी कॉल ऑलवेज द डॉक्टर्स टू perform a homeostasis of the body. The homeostasis means that the balance of the internal environment. The internal environment must be present in the stethoscope so that the status of the internal environment should be bring back. So we are performing to restitute the physiological functions towards the normality. So whenever there is any fluctuation, whenever there is any pathological condition, whenever there is any damage or injury, it has to repair and to reverse back towards the normal. So these two systems, normally the nervous system and the endocrine systems are maintaining the balance of the body, and they are performing the role of a doctor in the body. So this is the internal doctors which always repairs the body conditions. They constantly send the instructions to the rest of the body. ये दोनों सिस्टम जो है एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, दोनों सिस्टम मैसेज भेजते हैं continuously to the body, telling it how to respond to changes in the internal and external conditions. So mostly the external conditions affects on the internal condition of the body. Whenever you are going into a sunlight, or whenever you are sitting in a AC room, then definitely in a cold season that affects on the internal environment, which has to be compensated by the endocrine system and the nervous system. तो ये coordinate करता है endocrine system और nervous system एक दूसरे से कि एक्सटर्नल जो कंडीशंस हैं, जैसे आप खाना खा रहे हो, आप पानी पी रहे हो, तो दैट इमीडिएटली इफेक्ट्स ऑन द बॉडी एंड मोस्टली द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम नॉर्मलाइज द फंक्शन टू रिवर्स बैक अंडर द फीडबैक मैकेनिज्म, उस कंडीशन को नॉर्मल करता है. तो दी बोथ सिस्टम्स यूज द केमिकल्स टू ट्रांसमिट देयर मैसेजेस. दोनों सिस्टम जो है वो मैसेजेस ट्रांसफर करने के लिए, ऑर्गन्स और टिश्यूज को मैसेजेस देने के लिए वो केमिकल्स यूज करते हैं, बट दे डू इट बाय डिफरेंट मीन्स. लेकिन वो जो केमिकल मैसेज पहुंचाते हैं वो दो मुख्तलिफ सिस्टम के साथ उसके मैसेजेस पहुंचते हैं. जैसे दी एंडोक्राइन सिस्टम मैसेंजर इज अ हार्मोन, जो केमिकल है, जो सब्सटेंस है जिसके जरिए एंडोक्राइन सिस्टम अपना मैसेज
बॉडी को या फिर सेल्स को पहुंचाता है, उसको वो हार्मोन्स के जरिए पहुंचाता है, एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड सेल्स एंड मॉडिफाइड न्यूरॉन्स। तो ये जो हार्मोन्स हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं या फिर मॉडिफाइड न्यूरॉन से पैदा होते हैं। ये हार्मोन दे ट्रेवल थ्रू दी ब्लड स्ट्रीम। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स या सब्सटेंस या केमिकल्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू डिफरेंट टिश्यूज और सेल्स को पहुंचते हैं, और जिससे ये मैसेजेस सप्लाई करते हैं, और यहाँ से वो जो टिश्यूज सेल्स या ऑर्गन्स हैं वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। सो the action, the function starts when the endocrine glands reaches to the target cells, और टारगेट सेल्स पे रिसेप्टर होते हैं जो रिसीव करते हैं उस मैसेजेस को और फिर एक्शन लेते हैं to perform its function to produce a product. The nervous system messenger called neurotransmitters are produced only by the neurons. तो ये सिर्फ न्यूरॉन से प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स ये इनर्वेशन या नर्वस सिस्टम के नेटवर्क के थ्रू मैसेजेस पहुंचाते हैं। ये जहाँ जहाँ नर्व्स सप्लाई होगी वहाँ पे उसके मैसेजेस जाएंगे, अदरवाइज दे कैन नॉट कम्युनिकेट द मैसेज टुवर्ड्स द ऑर्गन और सेल्स until unless there is any supply of the nerves to the area. The endocrine system, जो endocrine system है, is a system of glands. ये glands का system है that produce the hormone. ये glands जो है ना हार्मोन पैदा करते हैं, वो जो chemical messengers in the body, वो chemical messengers के तो का रोल अदा करते हैं बॉडी में, and these hormones are released directly into the blood. और ये रिलीज होते हैं, जो हार्मोन्स ग्लैंड से रिलीज होते हैं वो ब्लड में डायरेक्ट रिलीज होते हैं, वो कहीं डक्ट में एक्यूमुलेट नहीं होते हैं। जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं तो वो डक्ट में एक्यूमुलेट होते हैं, फिर जो है ना ब्लड में स्ट्रीम में जाते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होते हैं और ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी, और ये ब्लड जो है उसको थ्रू आउट बॉडी ट्रांसपोर्ट करता है, और जहाँ पे रिसेप्टर्स और टारगेट सेल्स होते हैं वहाँ पे ये हार्मोन्स इफेक्ट करते हैं। अगर टारगेट सेल्स उसके नहीं है मौजूद, अगर वो रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है, तो दीज हार्मोन्स विल नॉट इफेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर और एनी सेल। तो इसका मतलब ये है कि ये इस तरह से काम करते हैं जैसे मोबाइल सिस्टम काम करता है, जैसे रेडियो काम करता है, या टेलीविजन सिस्टम का काम करता है, या ब्रॉडकास्ट कोई भी जो है सोशल नेटवर्क जैसे काम करता है, कि जिसको मैसेज भेजना है वो ही रिसीव करेगा जिसने स्टेशन लगाया हुआ होगा। मतलब दे नीडेड द रिसेप्टर एंड दे नीडेड द पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू इफेक्ट ऑन दैट receptors. Otherwise, all over the area, these messengers are present. ये जो हार्मोन्स है बॉडी में ब्लड में मौजूद होते हैं, लेकिन उस वक्त तक एक्टिवेट या उस वक्त तक एक्शन नहीं लेते जब तक उनको रिसेप्टर्स ना मिले, जब तक उनको टारगेट सेल्स ना मिले, या जिस ऑर्गन्स पे उसे इफेक्ट करना है उस ऑर्गन्स में वो रिसेप्टर्स मौजूद ना हो। Whereas the nervous system is able to effect rapid changes इन द बॉडी, नर्वस सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है बाय न्यूरॉन, और फिर इमीडिएट इफेक्ट करता है, रैपिड इफेक्ट करता है टू चेंज द बॉडी। सो द हार्मोन्स टेंड टू प्रोड्यूस द स्लोअर चेंजेस, जबकि हार्मोन्स जो हैं वो बिल्कुल ही आहिस्ता और स्लोली चेंजेस प्रोड्यूस करता है, और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो हार्मोन और एंडोक्राइन सिस्टम having a response, slow response but a long lasting response, बहुत देर तक उसका इफेक्ट चलता है, whereas the nervous system has to respond rapidly, quickly, and then it has a short action. Although they are released into the blood stream, specific hormone affects the biochemical activity of only one or a few specific organs.
जैसे कि ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं हार्मोन्स, सर्कुलेट होते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ऑल ओवर द बॉडी, लेकिन ये इफेक्ट सिर्फ इसकी बायोकेमिकल एक्टिविटी तब जनरेट होती है जब उन ऑर्गन्स पे रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो रिसीव करते हैं, then the organs works. So the an organ that responds to a particular hormone is referred as to a hormone's target organ. जब कोई भी ऑर्गन किसी भी हार्मोन को रेस्पॉन्ड करता है, उसके मैसेजेस पे एक्ट करता है और प्रोडक्ट या फिर एक्शन प्रोड्यूस करता है, तो उस ऑर्गन को हम हार्मोन्स टारगेट ऑर्गन बोलते हैं। या फिर अगर वो कोई सेल जो है ना रेस्पॉन्स कर रहा है, तो उसको हम उसको टारगेट सेल बोलते हैं या टारगेट टिश्यू बोलते हैं। Some endocrine glands produce only hormones. कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स पैदा करते हैं। Other produce both hormones and certain cell type such as the reproductive cells. कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो हार्मोन के साथ साथ रिप्रोडक्टिव सेल्स भी पैदा करते हैं, गैमेट्स भी पैदा करते हैं, जैसे ओवरीज है, टेस्टिस है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन इसके साथ साथ वो रिप्रोडक्टिव जो है सेल्स भी हैं, रिप्रोडक्टिव जो है वो ऑर्गन्स भी हैं। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहलाते हैं, लेकिन ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के तौर पे हार्मोन्स भी पैदा करते हैं। तो फॉर एग्जांपल दी सर सही चल क्यों नहीं रही सर? क्या चल नहीं रही है? The example of the former are the anterior pituitary gland, thyroid gland। सर सर्चिंग हो रही है बार बार। सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड जो सर बार बार सर्चिंग हो रही सर। एंडोक्राइन ग्लैंड सर आवाज भी सही नहीं आ रहा। सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो जो सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, लेकिन वो रिप्रोडक्टिव सेल्स पैदा नहीं कर रहे हैं। उनमें जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, थायराइड ग्लैंड आता है, और फिर जो है उसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड आता है, पैराथायराइड ग्लैंड आता है। नहीं तो इसलिए जो एग्जाम्पल है जो एग्जाम्पल है फॉर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वो हार्मोन्स भी पैदा करते हैं, और इसके अलावा जो है वो जो है हार्मोन्स भी पैदा करते हैं और रिप्रोडक्टिव सेल्स भी पैदा करते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल है टेस्टिस का, ओवरीज का। ये टेस्टिस ओवरीज जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स भी कहलाते हैं, लेकिन ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स का भी फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं और ये हार्मोन्स भी पैदा करते हैं। तो बोथ टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यूज ड्यूरिंग अ डेवलपमेंट। ये दोनों के दोनों जो हैं टाइप्स ग्लैंड्स के जो है वो डेवलपमेंट के दौरान ये टिश्यूज से, एपिथेलियल टिश्यूज से पैदा होते हैं। बट द एंडोक्राइन glands are ductless glands and secretes their products into the blood or lymph. ब्लड या लिम्फ में वो जो है प्रोड्यूस करते हैं, सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स को, और फिर वो सर्कुलेट करता है ऑल ओवर द बॉडी। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है दैट ट्रेवल्स वेरी शॉर्ट डिस्टेंस अक्रॉस द सिनेप्टिक स्पेस टू प्रोड्यूस देयर इफेक्ट। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये एंडोक्राइन जो सबस्टेंस है जिसको हार्मोन बोलते हैं, ये शॉर्ट डिस्टेंस पे जो है ना काम करती है। द टारगेट हार्मोन्स, द टारगेट्स ऑफ हार्मोन्स आर ऑल ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज इन द बॉडी। ये जो हार्मोन्स का जो टारगेट है वो सब सेल्स होते हैं, और सब सेल्स होते हैं। तो इसलिए जो है ये दी टारगेट हार्मोन्स आर ऑल द ये टिश्यूज पे और बॉडी के सब सेल्स पे हार्मोन्स इफेक्ट करते हैं जहाँ जहाँ उसके रिसेप्टर्स होते हैं। जबकि टारगेट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स आर जनरली ओनली मसल्स। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं
ये सिर्फ मसल्स पे इफेक्ट करते हैं, ग्लैंड्स पे करते हैं, और फिर जो है ना अदर न्यूरॉन्स पे करते हैं. तो दी एंडोक्राइन सिस्टम रिएक्ट स्लोली टू चेंज बट कैन सस्टेन इट्स रेस्पॉन्सेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड. तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना रिएक्ट करता है बिल्कुल स्लोली, लेकिन चेंज जो है ना वो लाता है जल्दी. और फिर ये है कि द नर्वस सिस्टम रिएक्ट्स क्विकली टू चेंज बट कैन नॉट सस्टेन प्रोलॉन्ग. तो प्रोलॉन्ग नहीं सस्टेन करता नर्वस सिस्टम, क्विक रिएक्ट करता है, चेंजेस लाता है, लेकिन that is not sustainable for a prolonged period. So it always, the reaction of the nervous system is a quicker than the endocrine system, and it is not a long lasting effect. The basic unit of endocrine system are endocrine glands located throughout the body. और फिर ये है कि endocrine glands secrete the tiny amounts of hormones directly into the blood stream. तो ये जो है वो हार्मोन्स टिनी अमाउंट में इस्तेमाल होता है. तो ये सीक्रेट्स करता है जो है हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में, और दिस मेथड ऑफ सीक्रेशन गिव्स देम द निकनेम डक्टलेस ग्लैंड्स. इसको हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं. तो इसका इसमें एंडोक्राइन सिस्टम में अब अगर हम रेट में देखते हैं तो मोस्टली इफ यू सी दैट वन, देयर इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड इन द cranial cavity, thyroid gland in the neck area, thymus gland around the trachea, and the adrenal gland near to the kidneys, seminal vesicle in the reproductive area, especially in the male. The prostate gland is present. Prostate gland is present around the area of a urethra, and then the testes are present in the which is 32 milligrams and 300 gram of a body weight of a rat. अगर रेट का जो ना 300 ग्राम वेट है तो उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड 12.9 मिलीग्राम निकलेगा, थायराइड ग्लैंड 250 मिलीग्राम निकलेगा, थायमस 475 मिलीग्राम निकलेगा, और इसके अलावा वेजिकल जो होगा उसका सेमिनियल वेजिकल जो होगा 500 mg होगा. प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो 425 mg होगा. तो इस तरह से जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे पेंक्रियाज हैं, जो Langerhans cells of the pancreas produce the insulin and even the glucagon. तो ये नियर टू स्प्लीन मौजूद होता है, और ये पेंक्रियाज जो है ना ड्यूडिनम के करीब पाए जाते हैं, इन द एब्डामेन और बिलो द लिवर एंड नियर द स्प्लीन पाए जाते हैं, एंड दे आर लाइक अ फिट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द रेट. Whereas the location of the ovaries and adrenal gland, the adrenal gland is above the cortex of the ovary. Ovary is like a P-like a structure, having a oviduct, having a uterus, uterine horns, and as well as a uterine body, cervix and urethra, vagina, and anus is the digestive system portion. So this adrenal gland and the ovaries act like the endocrine gland. Whereas the location of the ovaries and the other glands like stomach is present at point of 1, whereas the kidney is present over the point of 2, which is indicating, and the arrow is showing number 2 is a kidney, whereas the ovary is present at the number 3, and then this is also one of the this is one of the endocrine gland, the oviduct. This is not the gland, but it is a part of a reproductive organ. The uterine horn
the uterus also works whenever the animal is pregnant. It works like an endocrine gland. The rectum is a digestive portion, and then the urinary bladder is the portion of the urinary system. So when you will open the abdomen of the rat, you will see the liver, spleen, and as well as you will see the stomach, intestines. If it's a female, then you will see that ovaries, oviduct, uterine horn, and as well as uterine body, cervix, vagina, and vulva. In the digestive system, you will see that stomach, the small intestine, large intestine, and then the anus. This urinary system having a kidneys, then the ureterus, the urinary bladder, and urethra. So the cat. Now we are looking the in the cat that the pituitary gland is in the cranial cavity. The pineal gland is in a cranial cavity. The hypothalamus is also present in the cranial cavity. Parathyroid gland is around the trachea, and the thyroid gland is the two pairs of parathyroid glands are located up on the thyroid glands, and the thymus is also located at the area of the neck, where the adrenal gland is near to kidney, and then the ovaries are present in the female, and the testes are present in the male. They are also working as an endocrine gland and a reproductive organ, which is also known as a primary sex organ. Pancreas, it is one of the endocrine gland present in the cats. So mostly if you see the endocrine glands present in the brain, as I have told you, that there are hypothalamus, pituitary, anterior pituitary lobe, and then the posterior pituitary lobe, then the pineal gland, which is present in the cranial cavity of the cat. The anterior pituitary gland having the 7 known anterior pituitary hormones, like a growth hormone is produced by the anterior pituitary gland, prolactin is produced by the anterior pituitary gland, thyroid stimulating hormone is produced by the anterior pituitary gland, adrenocorticotropic hormone is produced by the anterior pituitary gland, follicular stimulating hormone is produced by the anterior pituitary gland, luteinizing hormone is produced by the anterior pituitary gland, melanocyte stimulating hormone. These are the 7 known and common anterior pituitary hormones produced by the anterior pituitary area or a lobe. So this is the anterior pituitary gland. If you see that the kidneys, the location of a left adrenal gland and a right adrenal gland, which is very near to the right kidney, and you are knowing that when the kidney is supported by the aorta, and as well as the inferior vena cava is supplying the blood, and then these kidneys are performing the role of a filtration to filter the blood. So now the dissection of the endocrine glands located at the thyroid gland on either side of the cranial end of the trachea, just below the cricoid cartilage. ये थायराइड ग्लैंड जो है एंड थाइमस ग्लैंड जो है ना कैट्स में, ये नेक के में पाए जाते हैं, और नेक की एरिया में स्पेशली जो कैरिकॉइड जो है कार्टिलेज उसके अराउंड, या फिर क्रेनियल जो एंड है ट्रेकिया की, वहाँ के सराउंडिंग में थायराइड ग्लैंड पाए जाते हैं. फिर थायराइड ग्लैंड के ऊपर 2 पेयर्स में पैराथायराइड ग्लैंड्स पाए जाते हैं. दिस इज अ टिनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन दी थायराइड ग्लैंड नोन एज अ पैराथायराइड ग्लैंड्स, एंड फिर थाइमस ग्लैंड जो है वो इंटीरियर साइड पे पाए जाते हैं. The adrenal glands are located cranial and slightly medial to each kidney, and each gland resembles a small lymph node and has the blue
abdominal vein which is transversing across it. तो इसका मतलब ये है कि ये एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कार्टेक्स के किडनी के कार्टेक्स लेफ्ट एंड राइट दो पेयर में एड्रिनल ग्लैंड पाए जाते हैं. दे आर वेरी नियर टू अ किडनी. और जो फेरिनो को एब्डामिनल वेन है उसके बिल्कुल ही ट्रांसवर्स पाए जाते हैं. So this is the main area where the adrenal glands are located. The pituitary gland hypophysis is attached to the hypothalamus by stalk, and that is influenced by the pituitary gland is located in the cranial cavity, and obligatory bulbs are dura medulla, and pituitary gland is very near to a spinal cord as well as at the junction of the brain and the spinal cord. So pituitary gland infundibulum के बिल्कुल ही नीचे पाया जाता है और ऑप्टिक चियासिज्म के बिल्कुल ही करीब होता है, और मेमलरी जो बॉडी है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के बिल्कुल करीब होती है, और पाइनियल ग्लैंड जो है वो अबूद इंफंडिबुलम पाया जाता है. तो काडल जो है व्यू है ये पेरिनियल ग्लैंड का शीप में, और द पेरिनियल ग्लैंड में बी फाउंड इन आइदर द कैट ब्रेन और शीप ब्रेन इन अबव द कॉर्पोरा गार्डिजेमना ऑफ द मिड ब्रेन. मिड ब्रेन के बिल्कुल ही ऊपर पाया जाता है, और ये शीप और कैट में मोस्टली द लोकेशन इज वेरी clear either on the above the corpora chondrigina, और ये जो है the pancreas is located in the abdomen cavity, coursing adjacent to the duodenum के साथ attached होते हैं, and then curving within the mesentery medially underneath the greater omentum. greater omentum के बिल्कुल ही करीब होते हैं और लिवर के बिलो होते हैं the pancreas, and the if you see that the duodenum this is very near to the spleen, whereas it is medially located with the mesentery, and as well as it's curving to a duodenum, and this is very near to a greater omentum. ये ग्रेटर ओमेंटम के बिल्कुल ही करीब पाए जाते हैं. The location of the ovaries, the vagina, cervix, then the uterine body, the uterine horns, oviduct, and then the ovaries are present in the female reproductive organs. The parts of a female reproductive tract, the uterus has been everted and then laid out on the surgical table. If you see that one, the ovaries are two ovaries are present, right and left ovary, then the oviduct, and then the uterine body, uterine horn, and then uterine body. It is attached with the cervix and vagina. If you see the location of the testis, that it's the cord-like spermatic cord is present over there, the ductus deferens, the head of epididymis, the body of epididymis, tail of epididymis. If you see the testis, main and tunica vaginalis, which is covering of the testis, and the testis and the components parts of cat. The lower needle is under the head of the epididymis, and the upper needle is dark hub is under the tail. So the tail of the epididymis is located over here, then the body of the epididymis, then there is a head of a epididymis, and then it is attached with the ductus deferens, and then it is going to a spinal cord. So this is the location which is present. These testes are present in the scrotum out of the body in the male. If you see that this is the mouth of a rabbit,
This is tongue, this is the teeth, and then if you see into the trachea. So this is the trachea where the thymus and the thyroid glands are present in the rabbit. The trachea, lungs, heart of a rabbit is exposed over here. This is the heart which is present, and the trachea is attached with the lungs, and the thymus gland is at the posterior end, and the thyroid gland is at the junction of a trachea and the larynx. You can see that this is the eye of and the mouth of the rabbit. This is the rabbit which is opened, and then the opening of the abdominal organs. You can see that the stomach, intestines, and this is the covering of the rabbit is open, and you can observe the various organs present over here. This is the carcass of the rabbit. The skin is being removed, and only the carcass is being shown, that the skeletal mass or muscles and even the structures of the anatomical structure of the rabbit can be studied. So you can see this is the carcass of skin of the rabbit, and this is the carcass of the rabbit, and this has to be shown over here to observe. This is eyeball having a cornea, having a pupil, and then this is the complete eye of rabbit. If you see that there is a stomach of the rabbit, and the heart, and then the lungs and liver, the kidneys, and the intestine of the rabbit. When you are opening an abdominal cavity, you can see that the cecum is a larger portion of the intestine, which is very much covering whole the abdominal region, and even you can see the kidneys, and they have a connection with the ureter and the urinary bladder. So if you see, this is the esophagus, and then the stomach, and then the duodenum in the rabbit. This is the digestive system of a rabbit excreted. Intestines. सर आपकी आवाज को क्या हो गया? सर आवाज कट, सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं आ रही, सर वाइब्रेट हो रही है पूरी आवाज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर अभी भी नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही। 35 से शुरू करें सर। शाम जो वाले वाले यही कर कैसे हो जो अल्लाह भरे जा पानी। Close your mic. Close your mic. तुम जब भी मिले जे मानोगे तुम को एडी काप से संभाल के तो कम दिए जे करे ना कर। Close your mic. ये कूलर आप माइक खोल के बैठ जाते हो, और फिर आप अपने जो है घर में बातें कर रहे हो, which is disturbing this class. This is the portion of the liver of a rabbit, which is showing that one the rabbit heart, and then this is the trachea of the rabbit, and these are the lungs of a rabbit, and kidneys of the rabbit. So these are the two kidneys of the rabbit, and this is located. The kidneys are located in the carcass, and this is the brain of a rabbit. So when we will perform this is the testicle of the rabbit, and when we will perform this dissection, then definitely we will locate all these organs present in the rabbit, present in the cat, present in the
rate. So we have discussed over here the anatomical structures as well as the location of a different organs or endocrine glands, especially where they are being